So our part is to understand what are the sources. Agar plants and animals hai, so what are the animals? You know that alpaca, llama, sheep, camel, okay, Yeah. goats, yak. Those are the examples. Okay, now if we take example of plants, तो plants में कौन सा example है जहाँ से हमें fiber मिलेगा? Cotton plant, jute Perfect, plant, perfect. coconut tree. Very good. That Flex is what plant. I'm expecting. Okay. Very good. Coconut peat is also a very good example. But right now we are not. See, if you go to that coastal area, no, in that coastal area they are using this coconut peat, coconut fibers, and they are preparing those carpets. And those are a Yes. very good things, है ना? अगर हम simple हम study करेंगे, इस standard में you are going to study the combination of artificial and this natural fibers. Okay, poly wool, जो carpet हम घर पे लगाते हैं, गुजरात में इतना कॉमन नहीं, इट्स नॉट कॉमन, बट इफ यू गो टू दैट अब्रॉड रीजन और सम ऑफ द रीजन वेयर दे आर गोइंग टू फेस एक्सट्रीम कोल्ड, है ना, वहां पे कारपेट्स यूज होते हैं. सो दोस कारपेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पॉलिएस्टर एंड वूल. ओके, बट आपने जो बताया बेटा है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. जो कारपेट बनती है वो पूरी नेचुरल फाइबर से बनती है. वेरी गुड. ओके, very good that you are understanding what are the fibers, those are the resources from the plants. Fine. So अब हमें ये भी पता चल गया कि ये एनिमल्स है एंड ये प्लांट्स है जहाँ से हमें ये फाइबर्स मिलेंगे. अब फाइबर्स कलेक्ट हो गए, तो सेकंड स्टेप, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? वी नीड टू, अच्छा सपोज, सपोज कंसीडर दैट कि हमने शिप से उसके हेयर रिमूव किए. सो डायरेक्टली वी कैन नॉट वेयर दोज हेयर. उसको उसको हमें फैब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो वो कैसे करेंगे? That is the procedure that we are going to see in this chapter, right? We are going to divide our chapter maybe into two parts. Okay, one is wool and second is silk. हम wool और silk को study करने वाले. Both of them, those are the those are the fabric, and who is responsible for that product formation? नेचुरल फाइबर्स. Nature. सिल्क हमें मिलेगी सिल्क वॉर्म से और वूल मिलेगा हमें एनिमल से. ओके, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है चैप्टर. ऑलवेज यू नीड टू ब्रेक डाउन योर चैप्टर डिपेंडिंग अपॉन द मेन टॉपिक्स. तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, कितना भी लेंथी चैप्टर क्यों ना हो. एक चैप्टर अगर 30 पेजेस का भी होगा ना, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट, इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन. ओके, ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट हियर. Let me know whether screen is visible or not. Okay. Okay, I'm sharing it here. बेटा. Visible. Okay. Yes, ma'am, visible. Yes, ma'am, Okay. So visible, let us start with. Hmm. It's blur. but ma'am, is blur. The Okay, letters don't are worry. small. It will take a Sentence. little bit time, beta, because right now it must be loading in your screen. Okay, वो जैसे पूरी बुक लोड हो जाएगी तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा. Okay, you know that buffering है ना, सब YouTube देखते हैं ना, buffering कैसे होता है. Yes, ma'am. ऐसे ही डॉक्यूमेंट भी होता है बफर. ओके, बट यहाँ पे सिर्फ वो स्क्रोलिंग दिखता नहीं है. ओके, बफरिंग दिखता नहीं है. फाइन. नाउ विल स्टार्ट विद द वूल. फर्स्ट इज अवर वूल. हम एक क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. ओके, सो ओवरव्यू देखेंगे. फाइन. व्हाट इज वूल? नेचुरल रिसोर्सेज, दी एनिमल. Here we can see which animal? Sheep. Right now we can see the sheep. Fine. So we are going to use here two types of hairs. Always now onwards, if you are sitting with your textbook, you are going to highlight whatever I am going to highlight. Okay. तो जब भी आपको क्विकली रिवीजन करना होगा, you are going to directly check this highlighted portion. मैम Yes, बेटा. अभी भी blur ही दिख रहा है Don't worry, और don't worry छोटा about भी. it. If you can't see this one, no, don't worry about it because I am going to explain you everything. Okay. If it's not there with you, textbook, or you can't see that, then also don't worry about it. Fine, beta.
Okay, so first part is that fleece. Now what is fleece? अच्छा, you are having two types of jackets in winter, है ना? दो टाइप के जैकेट्स होते हैं, हाँ या ना? एक होगा बहुत Yes. भारी हो जाएगा और एक वूलन का होगा। दूसरा होगा इट्स समथिंग लाइक कि ऐसे लगेगा कि ये प्लास्टिक है या वूल है, समझ में नहीं आ रहा है, बट इट विल बी द लाइट वेटेड वन, है ना? एक ऐसा होगा। सो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्लीस। ओके, दैट इज फ्लीस। सो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल वूल। आप जब भी शीप से हेयर रिमूव करोगे, ओके, एट द टाइम व्हाट विल हैपन, वहां पे बहुत अलग अलग टाइप के, सपोज अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें, यू विल सी दैट सम ऑफ द हेयर्स आर वेरी स्मूथ, सम ऑफ देम आर वेरी हार्ड। एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, ओके, एट दैट टाइम आल्सो इट विल हैपन। तो वी नीड टू व्हाट, वी नीड टू डू व्हाट, आई एम शेयरिंग वन वीडियो विथ यू, let me know whether it's visible or not. Okay, we will quickly revise, but we don't want our session boring, so we'll go with that video. Yes beta, do one thing, please do one thing, those who are unmuted थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो, वरना वीडियो अच्छे से नहीं सुनाई देगा। फाइन, अगर क्वेरी हो तो बाद में आप अनम्यूट कर लेना। Okay, we'll start with this wool only. Visible. Visible beta? Animal fiber, wool. Fibers are used to make yarn, which in turn is used to make fabric. अच्छा, ये इमेज माइंड के अंदर सेट कर लेनी है। ओके, जैसे फूड चेन होती है ना, सनलाइट, प्लांट्स, हर्बीवोरस एनिमल्स दे आर गोइंग टू बी फूड ऑफ व्हाट, कार्निवोरस एनिमल्स, लाइक दैट। तो फाइबर से पहले क्या बनेगा, जैसे उत्तरायण में होता है, राइट? इन उत्तरायण यू आर हैविंग दोस पिल्लास और रील्स, एक रील होती है हमारे पास, राइट, अलग अलग। तो हम रील बनाते हैं उसकी पहले, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज इट, राइट? वैसे यार्न बनेगा एंड आफ्टर दैट उसमें से फैब्रिक बनेगा। Fibers obtained from plants are plant fibers, while those obtained from animals are animal fibers. ओके, प्लांट फाइबर्स क्या है? जूट, ओके, और सेकंड है कॉटन। आपने ये कॉटन वाला जो देखा होगा बहुत सारे फार्म्स में, जूट वाला इतना कॉमन नहीं है, बट इन सदर्न एरिया यू विल सी दैट कि जूट का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा होता है, फाइन। एंड इन एनिमल फाइबर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सिल्क एंड वूल। फ्रॉम सिल्क, मेरे पास जूट की बैग है। यस बेटा, ओके, सो दैट इज द वंडरफुल थिंग। एंड जूट इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो हमें प्लास्टिक की जगह वही यूज करना चाहिए, ओके, वो भी स्टडी करेंगे हम, बट 8 में डिटेल में। Silkworm, that is the resource for silk, and wool, sheep and the other animals, right? For example, wool and silk. In this video, we will talk about wool. Some animals such as sheep have thick coat of hairy fibers on their body. It is called fleece. The question is, why do they have such a thick coat of hairs? Reason is simple. Fleece traps air. Since air is bad conductor of heat, therefore, heat does not pass from animal body into surrounding environment. This helps to keep their body warm. We obtain wool from fleece of sheep. The clothes made of wool keeps us warm. Basically, the skin of sheep have two types of hairs, coarse beard hair and fine soft underhair. Okay, now you will see beard, है ना? Beard hairs are always coarse, coarse यानी कैसे, रफ हो गए, बट हमारे जो हेड के ऊपर हेयर होते हैं, राइट, दोस आर द स्मूथ हेयर। आप टच करोगे तो सिल्की लगेगा, है ना? इसके ऊपर से बहुत सारे शैम्पूज के एड बन जाते हैं, राइट? फाइन हेयर से यानी क्या, कि जो बहुत स्मूथ हो गए, ओके। और एक होगा कोर्स हेयर, जैसे कि बियर्ड। इन द केस ऑफ मैन यू विल सी दैट कि जो बियर्ड होती है एट द टाइम यू विल सी दोस आर द हार्ड स्ट्रक्चर। तो दो टाइप के हेयर हो गए। Located close to skin. Wool is obtained from fine underhairs of sheep. There are some breeds of sheep which have only fine underhair. If we select parents which produce only soft underhairs, then they give birth to a sheep which will have only soft underhairs. Okay, तो कुछ sheep ऐसे होते हैं। These are the breed. Breed यानी क्या? Animal breeding यानी क्या? We are going to choose who will be the parents of their newborn.
baby of that sheep. Okay, so if this sheep, both of the sheep, they are having fine hairs, तो उनका जो बेबी होगा उसके पास फाइन हेयर्स ही होंगे, कोर्स हेयर्स होंगे नहीं. So that is the animal breeding. Fine. There we are going to see what is that word. Okay, but generally there are two types of hair. So, it is possible to produce organism with desired characters by selecting the parent of similar characters such as soft underhair. The process is called selective breeding. Selective means what? We are going to select the parents because both of the parents are having fine hairs to their baby shape. It contains what? The fine hairs. So we are selecting the parent. Okay, means man. They are going to man-made. We are going to use once again the word natural and man-made. We cannot say man-made, but at least we can say it's not the natural selection. Okay, we are going to selectively breed. Okay, breed dogs. You know that what are the breed dogs? Okay, we're saying selectively breeding of sheep. There are other animals too, which provides wool. For example, yak wool is popular in Tibet and Ladakh. Angora goats found in hilly regions like Jammu and Kashmir provides Angora wool. Wool is also obtained from the hairs of goats. The underhairs of Kashmiri goats are very soft. These are used to make fine shawls called pashmina shawls. In South America, animals such as llama and alpaca provides wool. Angora rabbit also provides wool. I hope you have understood this topic very well. Thanks for watching this video. Okay, beta. Wool is clear. Wool is clear. Now we'll see the cycle. Okay, how exactly they are producing that fiber, how they are going to treat it. Okay, next topic is that यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? What are the resources? Resources पूछा जाए तो ये सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, सिर्फ एक या दो लिख के नहीं छोड़ना है कि एंगोरा रैबिट एंड एंगोरा शिप और गोट. ओके, नहीं. पश्मीना शॉल्स, व्हाई इट्स कॉस्टली, तो क्या बताओगे? बिकॉज इट्स द अंडर हेयर ऑफ दैट गोट, है ना, तो इजीली इतना अवेलेबल नहीं है जितना हम आर्टिफिशियली चीजें बनाते हैं. ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? No. नो डाउट्स, राइट? No, ma'am. Okay. So next is wool treatment. Okay, now let me know whether this is visible or not. Okay, is that visible, beta? Visible. Okay, great. So we are going to see that process. Processing fiber into wool. We cannot use fibers obtained from sheep directly for making sweaters, shawls, and many other things. Instead, these are processed in stepwise manner. Here, in this lesson, we will learn how fibers are processed into wool. The first step is shearing. The layer of hairs around the sheep body is called fleece. Shearing is the process of removing fleece and the thin layer of skin from the sheep body. For this process, tools similar to those used by barbers are used. The outer skin of animal body is dead, so shearing does not harm the sheep. However, this process must be done during hot weather. The reason is simple. If shearing is done in winter, then the cold climate could harm the sheep since the protective layer is not present. However, in hot weather, they can remain safe even if there is no protective layer. After shearing, the skin rebuilds in some days and the hair starts growing again. Shearing provides fibers. After shearing, the next step is scouring. The hairs, that is fibers, obtained from shearing
contains dirt such as grease and dust. First step is shearing. Shearing means we are going to remove it from the body. Second thing, we need to remove the dirt particles, grease, okay, dust particles, or exactly what we are trying to do in this covering, that we are going to clean it. Fine, that is the second step. It must be removed before further processing. Thus, the sheared skin along with hairs is washed thoroughly to remove dirt. It is called scouring. It is done by hand or by machines. It is then dried and sent to factory. Scouring provides clean fibers. After scouring, the next step is sorting. In this step, the name itself suggests sorting. Sort out means what? कि जल्दी से वो काम खत्म करो. कैसे करेंगे जल्दी से खत्म? We need to identify which one is coarse hair and which one is fine hair, and we are going to sort it out. यानी अलग कर देंगे. Clean fibers are taken to factory where they are separated according to their texture such as length and color. The fine hairs are used to make cloths while coarse hairs are used to make rugs. There are small fluffy fibers called burrs present in the fleece. These are removed and used as burrs on sweaters. What are the burrs? Small hair-like structure है ना, जो burrs हमारे जैकेट्स में पीछे कैप के साइड पे होता है. Okay? The next step in processing wool is dyeing. The fibers are dyed, that is, colored according. What is the next step? We are going to color it. Normally, hair. If we are going to take the examples of hair color, तो animals के hair color में ज़्यादा से ज़्यादा क्या variety होगी? Brown, creamy white, white, okay, या फिर black. So बाकी के colors अगर हमें चाहिए, if we want the other colors, what we are going to do? We are going to dye it according to need. Since fibers are white, brown, or black naturally, therefore other colors are used for dyeing. After dyeing, fibers are straightened, combed, and rolled into yarn. This is how a woolen yarn is obtained. There are two types of fibers, longer fiber and shorter fiber. Longer fibers are used for making sweaters, while shorter fibers are used for making woolen clothes. So, I hope you have understood how fibers are converted into wool. For more. Clear? Now we'll take the second portion, and that is silkworm. Okay, so we need to understand first of all silk. What is that silkworm? Life cycle. Why? Because at the one of that stage we are going to get or receive what? Our silk. That's why we need to understand the cycle. है ना? हमने बाकी के animals का तो life cycle नहीं देखा. Alpaca का देखा क्या? नहीं. No. Because we are directly removing the hair and we are going to use it. But यहाँ पर एक life cycle का stage, right? We are going to use because we are going to form that cocoon around that. That we will see here in this life cycle. Okay. So in case of silk, we are getting that from silkworm. We need to understand first of all that life cycle. Okay. Yes. We'll check first of all this life cycle, and then we'll go for the production of silk. Let me know whether this is clearly visible or not. Visible. You must have seen that mom wears beautiful, soft and shiny saris on special occasions. The texture, beauty and the luster of the fabric grabs a lot of attention and appreciation. But what is this fabric exactly? It's nothing but silk. Yes, we have come across this term several times. Let us now understand what silk is and how the fibers are obtained. To start with, can you tell me the source of silk fibers? Is it a plant or any animal? It's an animal. This small worm called a silkworm gives us silk threads. But how can we get threads from such tiny? We have seen whole video, right? अगर याद हो तो हमने पूरा फैक्ट्री में जाके कैसे वो येलो कलर के पूरा एक थ्रेड बनाते हैं अपने अराउंड, राइट? और फैक्ट्री में लार्जर अमाउंट में वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है. ओके, हमने पूरा वीडियो देखा था और स्टेप्स बहुत ही डिटेल में स्टडी किए थे.
Right now we are going to revise it. Tiny creatures? And how many threads can this little one give us? Let's get to know the complete process by understanding the silkworm's life cycle. To begin with, the first stage is where the eggs are laid by the female moth on leaves. Which plant leaves are preferred by the moths? It is the leaves of plants like mulberry which are preferred. So the egg stage is the first stage. The next stage is where the eggs develop into larvae. Larvae are forms that appear somewhat like this. Yes, the worm-like structures. The larvae grow in size by feeding themselves on the mulberry leaves. So the growth in these is gradual. The growth stages of these larvae are also given a scientific name. The stages are called instar. In literal terms, instar means the phase between the two molting processes of the insect larva. So in this case, we can say the larvae grow into first instar, second instar, third instar, and so on till they feed themselves enough. Once the larvae are content with the amount of food consumed, that is the leaves, they enter the next stage. This stage is their resting phase. So for resting, all we need is a cozy cover around ourselves. Just like the blanket that we take while sleeping. Similarly, even these larvae try to make a cover around them. This is when they secrete slimy thread-like structures from their mouth. This is important. From where they are going to release it, it's something like a spider web. It's going to release its web from the wrist area. But here they are going to release it from where? Mouth. Okay, and it will start rotating. See, this is the life cycle. In case of the other organisms, you are not going to see the same life cycle. Suppose if we take example of butterfly, उसका life cycle अलग होगा, frog का life cycle अलग होगा, and in the different stages you will see that कि उसके अलग-अलग forms बनेंगे. Similarly, also in our case, human being, okay, during that 9 months, बहुत सारे stages बनेंगे और आगे के stages में we don't know what organisms will form. उसके structure से हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से frog बनने वाला है या कोई और organism, okay? तो लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं पूरी लाइफ के, यानी एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होने के टाइम पे, दो स्टेजेस आर द लाइफ साइकिल. ओके, राइट नाउ वी आर स्टडीइंग इट फॉर व्हाट? सिल्कवर्म. तो सिल्कवर्म का कुछ ऐसा लाइफ साइकिल है. They swirl their head in all directions when secreting the threads. As a result of this movement, a thick coat of threads gets formed around their complete body. This coat is called the cocoon. Did you know that this cocoon is what is of great interest to us? Because it is this structure that will give us the silk threads after we process it. Once the cocoon is formed, the larva inside it starts resting and enters the next stage of its life cycle called the pupa stage. The pupa stage is where the organism is sessile, which means it does not usually move and it starts developing the organs which adult moths have. So here, the pupa rests inside the cocoon and starts developing into an adult. After it develops completely, the next stage, that is the adult stage, is reached. The mature moth is now ready to break the cocoon and fly away. This is the complete life cycle of a silkworm. So now can you tell me how silk is obtained from these animals? The cocoon is the main source of silk threads. Once the pupa develops into an... This is the whole life cycle. This is the whole life cycle. यानी सबसे पहले जब female moth, it's going to lay down the eggs on the specific leaves, and those are the mulberry. Mulberry leaves आपको पता है ना, जिसको हम शेतुर बोलते हैं. If you have visited your one of the village, no, right now we are receiving falsa, we are receiving some of the fruits, berries, right? Similarly, this is also one berry, that is mulberry. Okay? तो जैसे पेंडा, अगर हम पेंडा की बात करें तो they are going to live on that bamboo only. वैसे ही ये जो होते हैं सिल्क के मोथ होते हैं, they are going to live, they are going to completely survive upon what? This mulberry leaves. बहुत सारे mulberry leaves खाएंगे जब तक उसका size increase नहीं होता. Fine? Then it will start preparing the cocoon and then it will start developing into moth. Yes, beta. Ma'am, can you add me with another device? Yes, beta. Please enter that. I will admit you. Enter with the device. Okay. Adult and flies away leaving the cocoon behind, the cocoons can be collected and the threads are obtained. The threads in a cocoon are extremely strong. They are surprisingly as strong as steel threads.
Can you imagine? This silk threads are strong that you can compare it with what? Still यानी metal होता है, right? What is that? It is the metal. The processing of these threads further gives us the silk fibers. In short, these are the 4 developmental stages of a silkworm's life cycle. The eggs come first, then the larval stage, followed by the pupal stage, and lastly the adult stage where the mature moths fly out of the cocoon. But how and where do we get these cocoons from? Do we have to go to the forests where the mulberry trees are? Is there any other way to get them? The silkworms are reared in special farms. Rearing of these silkworms is a profitable industry by itself. The practice of culturing silkworms is called sericulture. Next, we will see this beautiful practice of sericulture and understand what is sericulture. Culture means growing something in a large scale. बहुत ही ज़्यादा large scale में कुछ produce करना, okay? Seri word is related to this. Sericulture means production of the silkworm, silk, okay? So that is known as silk. Silkworm culture means what we are doing. उसको बहुत ज़्यादा silkworms हम grow कर रहे हैं, क्यों? Because हमें बहुत ज़्यादा silk चाहिए, okay? That is sericulture. Clear, beta? Okay, what is your question? Fine. आराम से एक बार ये चैप्टर देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लो. Fine. Now we'll start with the next chapter. Heat से start करते हैं. Okay? यहाँ तक कोई डाउट है ये चैप्टर में? No, ma'am. No, ma'am. No. तो बेटा I didn't. मैंने कोई अंडरलाइन नहीं. Fine. Okay, so we'll start with the heat. अच्छा, अब heat से क्या समझ में आता है? You know that conductivity of heat, है ना? You understand what is that word? Conductivity of heat and conductivity of electricity, right? Shlok. So what is that conductivity of heat? And beta, we can see all of you, है ना Shlok? We can see all of you. So heat. First of all, heat is necessary or not? Necessary. Why necessary? For the growing For of example, branch. consider that. Consider करो बेटा कि right now if we are not having that sunlight और पूरे globe पे अगर heat ही नहीं होगी, so what will happen? Everybody die. यानी पूरा globe freeze हो जाएगा. You know that. बहुत सारे English movie में दिखाते हैं, right? Yes. Then what will happen? It will start freezing, and we cannot survive. So heat is important. Okay. If something is important for our survival, we are going to study it. है ना? Always we are going to ask, ma'am, why do we need to study this chapter? याद है ना? You have to ask always, why do we need to study and how we can relate it with our real life. अगर real life में उसके साथ कोई relation ही नहीं है, so why we are studying it? है ना? Ma'am. We are little bit selfish as a human being, है ना? कि अगर relate नहीं कर पा रहे, right? So why we are studying it, man? चलो नया chapter पढ़ते हैं, है ना? So heat it's related to us. अगर गलती से northern region या southern region में पहुंच गए, so you will understand the value of heat. But अगर गलती से हम सहारा के रन में, desert में, या फिर अभी अहमदाबाद में, है ना? So we know, we understand what is that heat. We don't want that much heat, है ना? बहुत ज़्यादा में heat की ज़रूरत नहीं है. That's why we are using air conditioners. Okay, fine. So we'll start with that. Yes, beta. Who was that? What's your question? Ma'am, to also measure what is fever or not. We have fever or not. Yes. What is your question, please? I have no question. I am saying the use of heat. Yes, beta. Yes. Go ahead. We use thermometer to know what is the temperature. Temperature of our body. Correct. Yes. And also to cook food, we need heat. Yes. Very good. Any other examples? Anyone? Or कोई example that there we are using heat? Or कोई example? Ma'am, we use heat to do if we feel cold, we can do fire. Okay. Also in agriculture.
And for Ma'am, vitamin D. we Okay. use it for scaring animals. Okay, now this is the unique examples. Carrying animals, right? Those who are doing camping or those who are visiting the forest, what we are doing? We are using that fire line, है ना? जो हम Fire. फायर यूज करते हैं रात को, ताकि वो फायर देके बहुत सारे एनिमल्स वहां से दूर रहेंगे और हम भी बच जाएंगे. Very good, very good. Okay, very good examples. Okay, I was not expecting that real life application, but वो बहुत ही अच्छी application. Okay, great. We will start with that. But before that, beta, you need to complete your class work. है ना, हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए यहाँ तक के. सो यू नीड टू कंप्लीट इट. एक बार देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो वी विल रिवाइज दैट लास्ट चैप्टर. फाइन, क्वेश्चन आंसर्स फिर से रिवाइज करेंगे. ओके, वी हैवंट स्टार्टेड एसिड बेस एंड सॉल्ट, राइट? हमने स्टार्ट नहीं किया था ना. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट किया था बेटा इन दोनों में से कोई चैप्टर? What, ma'am? Physical and chemical changes and acid base and salts. We haven't started these chapters, right? No, ma'am. Okay, fine. Okay, and one more thing I would like to know that आपके स्कूल में भी कौन सा चैप्टर चल रहा है? We have completed 3 chapters, but turn by turn let me know with Ansh. Yes, Sudha. Ma'am, we have completed till chapter 1 to 3. Okay, fine. Anyone else, Sudha? इसके अलावा और कोई नया चैप्टर हीट के Ma'am, अलावा? and in our school it has started revision. Okay, great. In our school, we have completed 2.5 chapter. Okay, Till third chapter. थर्ड चैप्टर. अच्छा, इसके अलावा कोई नया चैप्टर हुआ बेटा जो हमने नहीं किया हो? No, ma'am. No? Okay. Anyone else with a Daksh? What about you, Ayush, Tara, Rutwa, Vedant, Aman? इसके अलावा कोई नया चैप्टर नहीं है, right? I'm assuming that if you are not saying anything. No, ma'am. Okay, fine. Start with the heat. Let me know whether the screen is visible or not. Simply, once again, we are going to divide our chapter. Okay? क्या क्या है सबसे पहले देख लेंगे. So first of all, hot and cold. We need to understand what is heat. अगर heat समझ रहे हैं तो उसका opposite क्या होगा? Cold, है ना? Heat and cold. हमने heat का नाम दिया हो, यहाँ पे क्या हाजिर है? Can you see my screen? The screen it's showing here 37 degrees Celsius smoke. Okay. So what is that temperature? Current temperature that we are facing in Ahmedabad. Yes. Okay, fine. Just a second. It's just downloading. Okay, first is hot and cold. Then second part is what? Then we are going to see how we can measure heat, है ना? हमने तो बोल दिया कि heat जैसा कुछ होता है, but prove कैसे करेंगे? कि yes, heat is there. Okay, what exactly the heat? The meaning of heat? Heat यानी क्या? The hot temperature Correct. in weather. Okay, great. तो वो measure करना पड़ेगा. So second topic is related to measurement of the temperature or heat. We use lab thermometer to measure the heat. Correct. We are going to use 2 types of thermometer, but अभी तो हर घर में oximeter, thermometer, diabetes का checking, right? We are having all those things available, right? We are having digital thermometers available, right? Manual नहीं होगे जो, वो भी study करेंगे. But after that, next thing is that characteristics of the heat. Characteristic means what? Suppose if we take example of water, तो water की कुछ characteristics होंगे. That is, it can flow easily because it's liquid. It's a tasteless या फिर smell free, है ना? या फिर कोई shape नहीं होगा, shapeless, right? Those are the characteristics of the water, right? Color नहीं होगा, fragrance नहीं होगी. Similarly, there are some properties of the heat. वो study करेंगे. Hot to cold. Correct. Transparency यानी conductivity जो आप सब समझते हो. What is conductor and what is insulator? Okay, those are the property. After that, what we are going to see? We will see whenever we are
चेकिंग एनी ऑफ द बेसिक थिंग, जैसे हम हीट को स्टडी कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेस है. आप हायर स्टैंडर्ड में यू आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू प्रूव इट. जो भी हम स्टडी कर रहे हैं साइंस में, वी नीड टू प्रूव इट. So we are going to perform an experiment to understand the properties. Okay, conduction, convection, and basis upon the conduction and convection, real life में वो क्या effect करता है, we are going to see that. Okay, breezes, breezes यानी I'll show you what exactly it is. After that, seasons. Why we are understanding seasons? Because you know that we are having summer season and winter season. अब दोनों में extremely opposite condition होती है ना, एक में कोल्ड और एक में hot, right? And then we are going to see that कि कौन से season में we are going to protect ourselves with the help of what. Okay, so how we can divide our chapter basically into 3 parts. First part is what is heat, second part is measurement, and third part is what, the characteristics of the heat. Clear बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ये चैप्टर. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हीट. विल स्टार्ट विद दैट introductory part. यस बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हीट? सिंपली हीट की डेफिनेशन क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हीट? No gas which give us warm. Ma'am, can I say? Okay. Yes, Steve. Correct. A temperature which we can feel warm or hot. Okay. Okay. Heat is related to something. The temperature will be little bit high. है ना? अगर वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से सपोज 0 से नीचे चला गया तो वो कोल्ड हो जाएगा. ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. बेटा दोज हु आर सिटिंग हियर, what about them? Are you getting it? Diya, Aman, I can see all of you beta. At least say yes or no, है ना? Please keep your videos on. Okay, now I'm sharing my screen. We will continue with the first part. Okay, so they are giving us 2 activities here. We are having 3 examples, 3 or 4 examples. We are having ice cream, we are having tea, we are having fruit juice, and we are having handle of the frying pan. Okay, now we are coming across this concept heat. Coming across यानी आइसक्रीम को टच करते ही कुछ फील होता है जिसे हम ठंडा बोलते हैं, है ना? It's chilled, right? But when we are going to touch the tea, hot tea, so we are feeling something different. Okay, जलता है. What is that? That is heat, hot. Okay, so we are going to identify whether it's warm or hot or cold and cool. Okay, the activity, you know that what is that, but we need to understand what is heat. Okay, simply we are going to do one activity. Here you can see, first we are going to put our hand inside the hot water, and second directly we are going to put it inside the second hand, we are going to put inside the cold water. अब ये दोनों हाथों को हम क्या किसके थर्ड कंटेनर में डालें कि वो थर्ड कंटेनर, व्हाट इज द थर्ड कंटेनर कंटेनिंग? दिस थर्ड कंटेनर कंटेन्स व्हाट? मिक्सचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कंफ्यूज कर रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम को, राइट? वी आर नॉट लर्निंग अवर हीट चैप्टर, वी आर कंफ्यूजिंग अवर नर्वस सिस्टम. ये हो क्या रहा है? अभी तो एक हाथ से हॉट वाला मैसेज जा रहा था, एक हाथ से कोल्ड वाला मैसेज जा रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट? एंड थर्ड कंटेनर में व्हाट वी डिड, इन थर्ड कंटेनर वी हैव मिक्स्ड हॉट एंड कोल्ड. तो ये तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है ना. हीट तो बाद में समझेंगे, पहले नर्वस सिस्टम को समझाना पड़ेगा, है ना, वेदर इट्स हॉट और कोल्ड. सो व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू प्रूव हियर इज we are having one system, it's going to find out, because it's a sensory system, sense karegi whether it's smell, whether it's sound waves, okay, whether it's taste, or whether it's the touch. Okay, this is one of them. We are going to touch that hot water or cold water. But why we are performing this activity? To understand this phenomenon of hot or cold, that whether something, it will give the sense of, or if you are going to touch it, it will give the sense of hot and cold. So what is that?
What is that? Nothing but the temperature. Okay, hotness and coldness can be measured by temperature. Now, how we can measure it? That is the question. But before that, what is heat? Once again, same question. ये activity के बाद. Anyone? Ma'am, what is the question? What is heat? ये activity के बाद heat के बारे में क्या समझते हो? If something is too cold or something is too hot, okay, if something is too hot, or you can see that temperature is high, so that is the heat, right? Temperature के basis पे decide करेंगे whether it's hot or cold. That's why we are taking cold. अगर cold को समझना है तो hot भी समझना पड़ेगा. If you need to, yes, Ansh. If you want to understand what is day, you need to understand night. अगर night होगी तभी आपको समझ में आएगा ना कि what is day. अगर night होगी ही नहीं तो day ही रहेगा. Night के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? It's interdependent. वैसे ही cold समझना है तो hot समझना पड़ेगा. For heat we need to understand both of the fundamentals, hot and cold. Clear? Okay. अब measurement की बारी आती है. अब पता तो चल गया कि heat क्या है. How we can measure it? Measure तो करना पड़ेगा ना. पता कैसे चलेगा? राइट नाउ इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितना फीवर है, 100 के अप है या फिर उससे कम है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? इट शुड बी अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. अगर बढ़ गया तो दैट इज नॉट द नॉर्मल थिंग. बट मेजर कैसे करेंगे? यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ Thermometer. थर्मोमीटर है क्या? क्यों हम थर्मोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं? वी आर हैविंग सो मेनी अप्लायंसेस, वी आर हैविंग सो मेनी टूल्स, बट थर्मोमीटर से ही टेम्परेचर क्यों मेजर करेंगे? Ma'am, because thermometer can only bear it. राइट, है ना? अगर हम बात करें जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं. पेंसिल टच करके क्यों नहीं देख सकते हम? पेंसिल को टच What, ma'am? मेजर करो. आई एम हैविंग वन पेंसिल, ओके, I want to measure my body temperature with the help of pencil. Why it's not possible? Because it not has cell and that wiring. अच्छा चलो एक एग्जांपल. फाइन. Whenever you are visiting malls, malls में दूर से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से जब आप पहुंचते हो वो खुद से दरवाजा ओपन हो जाता है. Yes. Why? What is there? Sensor. The sensor. Perfect. सेंसर बढ़ाया, फिर से सेंस करना, है ना? तो मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? पेंसिल कुछ भी सेंस नहीं कर पाएगी, बट योर थर्मोमीटर कैन. डिजिटल वाला वैसे ही काम करता है ना, डिजिटल थर्मोमीटर और मैनुअल भी. बट मैनुअल में वी आर हैविंग वन टाइप ऑफ मेटल, Mercury. है ना? वो ऐसे सेंस, मेटल को ही आप हीट और कोल्ड में सेंस कर पाओगे. ओके, जैसे कि पेंसिल में क्यों नहीं हुआ? Why we are not having any of the sense of heat and cold with the help of that pencil? Because pencil is made up of wood, and wood are the poor or good conductor of heat? Poor. कंडक्टर हो, इसलिए हमें कुछ सेंस नहीं हुआ. बट मेटल को देख लो, गलती से किसी स्कूटर के साइलेंसर को टच कर लो, you know that you will understand what is heat and what is cold, because it's made up of metal, and the Ma'am, property I of metal is experienced what? that. A very good conductor of heat. समझ में आ गया? Yes बेटा. So why we are discussing this? तो जो आपका थर्मोमीटर है, okay, it's made up of glass and it's containing one type of metal. अब वो मेटल एक रेयर टाइप की मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है. कभी किसी मेटल को लिक्विड फॉर्म में देखा आपने? नो, ऑलवेज इट विल बी सॉलिड फॉर्म. बट इन साइंस ऑलवेज यू विल फाइंड आउट देयर विल बी सम ऑफ द एग्जांपल्स, दोज आर द रेयर, यूनिक, अलग तरीके की मिलेगी, है ना? क्लास में अगर मैम ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, सर ने क्वेश्चन पूछ लिया, कौन यहाँ पे आना चाहेगा? कुछ लोग हाँ में हाथ खड़ा करेंगे, कुछ ना में खड़ा करेंगे, बट कुछ तो ऐसे हो गई जो किसी में खड़ा नहीं करेंगे, है ना? ना तो हाँ में ना ही ना, राइट? सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन साइंस, जैसे कि मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में है. अब लिक्विड होगा तभी वो ऊपर उठ पाएगा. समझ लो कि इट्स मेड अप ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड मेटल खुद से क्या ऊपर जाएगा? नहीं. टेम्परेचर राइज होने पर दिस मर्क्यूरी विल मूव, है ना? इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस, but why we are discussing this working and action of this thermometer?
वो आपके 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो काम कैसे करेगा. व्हाई थर्मोमीटर, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर टूल्स. फाइन. ओके, we are going to divide the thermometer basically into two parts. और भी एग्जांपल्स है डिजिटल थर्मोमीटर के, जैसे आपकी एनालॉग डिजिटल वॉच होती है, टच स्क्रीन भी आ गई अभी. ओके, वैसे ही डिजिटल थर्मोमीटर्स भी होते हैं. ओके, पहले दो मेन ट्रेडिशनल वे वाले स्टडी करेंगे. व्हाट इज दैट? लेबोरेटरी एंड डॉक्टर वाला थर्मोमीटर. डॉक्टर वाला वैसे थर्मोमीटर होता है that with the help of which we can see the body temperature, जो सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के लिए यूज होगा या फिर बाकी केमिकल्स. ओके, बट इफ वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट तो हमें अलग थर्मोमीटर चाहिए. क्यों? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कौन बताएगा? अच्छा चलो एक एग्जांपल, आई विल गिव यू वन हिंट टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस आई विल गिव यू वन हिंट. व्हाई वी आर हैविंग टू डिफरेंट थर्मोमीटर्स फॉर लेबोरेटरी? लेबोरेटरी यानी क्या? दो टाइप की लैब हो सकती है. एक हो सकती है डॉक्टर की लेबोरेटरी और दूसरी हो सकती है साइंटिफिक. ओके, अब if we take example of doctor's laboratory, we need to only measure the body temperature, but if we have to perform different experiments, we will require that lab thermometer. What is that? Scientific thermometer, या आप बोल सकते हो कि जो laboratory thermometers. Okay, we need to measure. वहां पे हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज हो, बट हमारे बॉडी टेम्परेचर में ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? 110 तक, उससे ज्यादा नहीं. 110 हम अभी मैक्सिमम रखते हैं. वी विल सी व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड. ओके, अगर वही थर्मोमीटर हमने किसी एक फर्नेस, है ना, फर्नेस में सपोज अभी हम मेटल को पिघला रहे हैं, वी आर मेल्टिंग द मेटल्स. एक लेबोरेटरी में हम एक साइंटिफिक लैब में काम कर रहे हैं और उसको पिघला रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि उसका टेम्परेचर कितना होगा? इट विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस. अगर गलती से ये कैपेसिटी वाला थर्मोमीटर वहां पे डाल दिया तो इट विल ऑल्सो मेल्ट डाउन. सिंपल. इसलिए दो अलग अलग है. यहाँ तक समझ में आया? चलो बाकी का हम आगे डिस्कस करेंगे. बट टिल दिस पॉइंट डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. Simple. Whenever we are going to study this science subject, सिर्फ एक बार उसी दिन सिर्फ 5 मिनट निकाल के जो मेन वर्ड्स है वो देख लो बस. Yes, You don't need to mug up anything. You don't need to remember anything. Just see what are the dark words are there in your textbook. सिर्फ उसको रिवाइज कर लो 5 मिनट के लिए. If you don't want to take, if you don't want to open up the textbook, जो वीडियो दिखाया सिंपली आपको पता है हाउ टू सर्च इट, राइट? जस्ट एक बार देख लो, दैट्स इट, यू आर डन विद दैट. फाइन. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी 3 चैप्टर्स खत्म किए उसके क्वेश्चन आंसर्स टर्न बाय टर्न स्टार्ट राइटिंग इट, कंप्लीट दैट. ये उसी टाइम बोल दिया था, राइट? यू नीड टू शो इट इन अ डिजिटल फॉर्म, यानी स्कैन करके आपको बैंक को भेजना रहेगा. आई लेट यू नो हाउ, बट पहले आपका एक्सरसाइज फिनिश करनी है आपको. ओके, क्वेश्चन आंसर्स रेडी है ना? 2 चैप्टर्स तो पहले ही हो गए थे, थर्ड वाला लास्ट में हुआ था, तो 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स तो रेडी होने चाहिए आपके. ओके, यही है. आज से स्टार्ट कर लो ये सेशन, और नेक्स्ट सेशन को छोड़ के उसके बाद वाले सेशन में फर्स्ट चैप्टर में चेकिंग के लिए मांगूंगी. फर्स्ट चैप्टर यानी न्यूट्रिशन इन. आपको वर्कशीट मिली थी, राइट बेटा? वर्कशीट्स Yes, ma'am. थी ना, वो फिनिश हुई होगी ना? वो स्कैनिंग करके भेजती है. लेट यू नो, मैम को बता देंगे. ओके, What, ma'am? you need to submit your worksheets. We are going to check that. Ma'am, I don't have. You don't have? Yes, ma'am, I don't have. You are Worksheets. new joining beta, Shaumya. Yes, ma'am. Okay, okay. Ma'am will share with you, Shaumya. Okay. Fine beta. Done. Done. और कोई क्वेश्चन है? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Fine, fine beta. Take care all of you. Bye. We'll see Bye, you ma'am. soon. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, I'm making you a host. Ma'am, I'm making you a host. ओके ओके ठीक है मैम. वैसे भी ये लास्ट लेक्चर ही था. Okay, okay, fine.